Let's take you back to Luanda for the joint press statements by the presidents of Angola and India. A senhora Presidente Droupadi Murmu igualmente realiza uma visita de Estado à República de Angola. Isto não acontece por mero acaso, acontece porque ambos os países, Angola e a Índia, reconhecem a importância das relações de amizade que mantemos desde o ano de 1979 e a necessidade de reforço das relações de cooperação entre os nossos dois países. Nós identificamos, quer naquela ocasião, em maio do corrente ano, quer agora com os instrumentos que acabamos de assinar, identificamos as áreas que são do interesse comum em serem desenvolvidas. E o que precisamos daqui para frente é colocar em funcionamento a Comissão Mista Bilateral e, a partir daí, tudo fazermos para colocar na prática os entendimentos a que chegamos até a presente data. Precisamos de fazer as coisas acontecerem. Ficamos muito tempo sem que tivesse havido visitas ao mais alto nível. Agora que estão a acontecer, precisamos que a outros níveis, a nível dos técnicos, a nível dos responsáveis dos ministérios, implementem os entendimentos que estão espelhados nos acordos e memorandos que assinamos, quer em Nova Delhi, quer aqui em Luanda. Angola está particularmente interessada em cooperar com a Índia no setor da saúde. A Índia é muito forte nesse setor da saúde, não apenas pela qualidade dos médicos que gostaríamos de ter, muitos deles aqui no nosso país, nos hospitais, mas sobretudo na possibilidade dos nossos médicos e especialistas beneficiarem de formação, quer licenciaturas, quer pós-graduação, nas universidades indianas. Queremos particularizar o caso da luta contra o câncer. Uma das poucas doenças que diseases for which we are still obliged to send abroad the majority of Angolan citizens who befall that disease. So we would like that our experts could have better training in this field there in India, but also that as this is as embryo stage, we are still building the new oncology hospital. At this embryo stage, we could start benefiting from the cooperation from India, that Indian experts should follow up the development of the works and the type of equipment that we think to set up while we are also having our staff trained. But it's not all about health with India. We would also like to see Indian investors, I mean private sector, to set up manufactories for manufacturing both for medicines and vaccines for human here in our country. In this field, India also is very strong, mainly in generics. They supply virtually the pharmaceutical industry
of all over the world. India is also strong in information and communication technologies. India is also strong in the aerospace industry. We only have one satellite, which is a telecommunication satellite. It's true that we have commissioned a second satellite, which is Earth observation satellite, but we would also like to go hand in hand with India in this field, as they have science in this field quite well developed. Another sector is the defense sector, where India also has taken a very important leapfrog in the development of very advanced defense systems, drones and others in aviation. So we also would like to work with India in this field of defense and security sector, not only by importing what is manufactured in India, but also within the reach we could also see if we could bring some of those Indian factories here in our territory in order to have know-how transfer, and Angola also to become a producer of state-of-art weapons. So, Madam President Droupadi Murmu, once again, you're mostly welcome to Angola. We attach great importance to the fact that you have coincide your state visit with the participation in the celebration of the 50th anniversary of our national independence. This is something that will be remarked in the annals of the history of the relations between our two countries, Angola and India. Thank you very much, Madam President. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President. Now we give the floor to Her Excellency, Madam President Droupadi Murmu. Sua Excelência, Presidente da República de Angola, senhoras e senhores. Estou bastante feliz. Trata-se da primeira visita de Estado de um presidente da Índia a Angola, e por isso agradeço Sua Excelência, Presidente Lourenço, pela sua amável स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के उत्सव में भाग लेने और स्टेट विजिट पर आने का अवसर दिया। मैं अंगोला की सरकार और जनता का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे और मेरी प्रतिनिधिमंडल का आत्मीय स्वागत किया। मेरी टीम में हमारे राज्य मंत्री श्री बी समन्ना तथा हमारे संसद के 2 माननीय सदस्य श्री पी बसवा और श्रीमती डी के अरुणा शामिल है। आपकी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के लिए मैं भारत के 140 करोड़ नागरिकों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और स्नेहपूर्ण अभिवादन लाई हूँ। भारत ने एंटी कॉलोनियल प्रयासों के तहत अंगोला के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंगोला के पुनर्निर्माण और विकास में निकट सहयोग किया। हम अंगोला की प्रगति और यहाँ के लोगों की समृद्धि के लिए किए गए डेवलपमेंट एफर्ट्स की प्रशंसा करते हैं। हम अंगोला की अफ्रीकन यूनियन की वर्तमान अध्यक्षता के रूप में नेतृत्व के लिए भी उन्हें बधाई देते हैं। ये वर्ष भारत अंगोला संबंधों के एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। दोनों देश इस वर्ष राजनयिक संबंधों की
स्थापना की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस वर्ष मई में हमें महामहिम राष्ट्रपति लॉरेंसो को उनके भारत के पहले स्टेट विजिट पर स्वागत करने का सम्मान प्राप्त हुआ। उनके विजिट में हमें हमारे घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों की सभी पहलुओं की समीक्षा करने का अवसर प्रदान किया। डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए क्रेडिट लाइन के अलावा कृषि, ट्रेडिशनल मेडिसिन और आयुर्वेद तथा सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम के क्षेत्र में 3 MoUs पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत और अंगोला की साझेदारी आपसी विश्वास, परस्पर सम्मान और हमारे लोगों के समृद्धि भविष्य की साझा दृष्टि पर आधारित है। हम द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने और क्षेत्रीय व वैश्विक मामले में विचारों के आदान प्रदान के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। आज राष्ट्रपति लॉरेंसो के साथ मेरी विस्तृत वार्ता के दौरान हमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा करने और क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारी आर्थिक साझेदारी एक जीवंत एनर्जी पार्टनरशिप पर आधारित है। हमने नए क्षेत्रों में व्यापार और निवेश संबंधों को और विविध बनाने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें टेक्नोलॉजी, कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और पीपल टू पीपल टाइज शामिल है। राष्ट्रपति जी और मैं इस बात पर सहमत हुए कि हम विभिन्न द्विपक्षीय क्षेत्रों में तथा इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के व्यापक संदर्भ में अपने सहयोग को गहन बनाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। हमने फिशरीज, एक्वाकल्चर और मेराइन रिसोर्सेस तथा कॉन्सुलर मामले में सहयोग के लिए 2 MoUs भी संपन्न किए तथा एयर सर्विसेज एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने का भी निर्णय लिया। अंगोला ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में शामिल होने का निर्णय लिया है। हम अंगोला का IBCA और CVA में स्वागत करते हैं। कल दोपहर मुझे अंगोला की नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट से मिलने का अवसर मिलेगा और मैं अंगोला की संसद के माननीय सदस्यों को संबंधित करूंगी। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत अंगोला के साथ संसदीय सहयोग को बढ़ाने की आशा करता है। मैं भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ मिलने के लिए भी उत्सुक हूँ। हम लोगों के सामने अंगोला के माननीय राष्ट्रपति बहुत सारे मुद्दे सामने रखे। सभी क्षेत्रों में हम लोगों का बातचीत पूर्व हो चुका है। इस दिशा में दोनों पक्ष हम साझेदारी में काम करने के लिए हम इच्छुक हैं। मुझे लगता है दोनों पक्ष विचार विमर्श करके ये मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे और दोनों देशों के विकास को मजबूत करने के लिए प्रयास करेंगे। एक बार फिर मैं राष्ट्रपति लॉरेंसो को उनके आतिथ्य और स्वागत के लिए हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरे ये यात्रा हमारे द्विपक्षीय संबंधों तथा मित्रता को और अधिक मजबूत बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। धन्यवाद। Muito obrigado aos dois chefes de Estado pela sua disponibilidade. Concluímos assim esta parte do programa. Muito obrigado mais uma vez. All right, you were watching the joint press statements by President Droupadi Murmu and her Angolan counterpart João Lourenço. President Murmu is the first Indian head of state to visit that country. It coincides with Angola's 50th anniversary of independence and 40 years of the establishment of India-Angola ties. Just to take you through the main points of
The two statements made there, President João Lourenço said that Angola is keen to cooperate with India in medical education and training, especially in cancer care, treatment and research. He invited Indian companies to invest in Angola, set up pharmaceutical ventures in that country. Also, he said that today Angola has only one telecommunication satellite. Therefore, Angola would like to work with India in space technology going forward. He said defense and security is another area of potential cooperation. For her part, President Murmu said that India has signed a number of MoUs with Angola. And earlier in her statement following talks with President Lourenço, President Murmu said that her visit to Angola follows that of President Lourenço's visit to India in the month of May. And on Monday, President Murmu will address Angola's parliament. So that was all for this segment of the special broadcast. Thank you for watching DD India. Bye-bye.